We always thought that the last ice age was 10,000 years ago. Despite global warming, there's one descending upon us right now. Inequality, both social and economic. Conflict based on identities and ecological brinkmanship are defining the coming of the next ice age. With one of the largest youth populations in the world, it's a no-brainer. Young people have to be involved in solving the challenging paradoxes that humankind faces today. Getting youth inspired to engage is not an easy task. I can tell you this because we have been working in the field of youth-centric development for 3 decades now. We are vartaLeap, a cross-sectoral coalition with more than 150 youth-engaging organizations. And we facilitate self-to-society journeys towards the vision, every youth a Jagrik, every space nurturing Jagriks. Today, we have become well-known faces of youth-centric development. But this journey hasn't been easy. We had to go through our share of pain. We made countless mistakes that we later learned from. In fact, not long ago, we came together to talk about these mistakes, and our learnings led us to draw out certain indispensable principles of youth-centric development. These principles took us decades to frame, but could perhaps help you avoid the same failures, help you learn from our pain and reach meaningful change faster than we could. To learn from mistakes, the first thing we have to admit is it's not working. I will stop talking now and introduce you to 7 of our friends, committed community leaders and dynamic youth workers. Each of their journeys is a testament to the diverse communities they work in and their own challenges in the ever-evolving youth workspace. Each journey unfolding mistakes and learning that led us to adopt a root principle of our work. कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि जो मुद्दे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो संस्था के मुद्दे नहीं हैं, वो समुदाय के मुद्दे हैं। Ajay Pandit co-founded Synergy Sansthan in 2006. He has dedicated 16 years of his life to challenging the traditional approaches towards youth development in rural communities. सिनर्जी की शुरुआत 2006 में युवा साथियों के साथ मिलकर हुई और जब यहाँ पर काम करना शुरू किया तो देखा कि बच्चे स्कूल में नहीं पहुँच रहे हैं, आदिवासी बच्चे खासकर। तो समझ में आया कि ये मुद्दा जो है वो बाल बंधुआ मजदूरी है। सच मायने में ये एक प्रथा है, जो एम्प्लॉयर है जो बच्चों को एम्प्लॉय करता है, कम पैसे में जो है एक मजदूर मिल रहा है और वो लगातार काम करता है, वो प्रश्न नहीं पूछता। कई अलग अलग तरीके से एडवोकेसी के मोड में हम लोगों ने काम शुरू किया और करीबन 500 बच्चों के साथ में सीधे रूप से हम लोगों ने बाल बंधुआ मजदूरी रोकने पर अपनी ताकत लगाई। हमारी अप्रोच जो थी वो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच था, जहां पर पुलिस को शामिल किया गया, जहां पर मीडिया को शामिल किया गया, जहां सरकार को शामिल किया गया और काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स पर FIR भी हुई और काफ़ी तनाव उत्पन्न होना शुरू हुआ। Often when working on social issues, a linear problem-solving approach may alienate people. On the other hand, using empathy and working collaboratively may contribute to a much more sustained and harmonious outcome. युवाओं के जो पेरेंट्स थे, जो अपर कास्ट से भी थे, जो एम्प्लॉयर से जुड़े हुए साथी भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये हमें रियलाइज़ करवाया, ये फीडबैक दिया कि हम एम्प्लॉयर को छोड़ रहे हैं, जहाँ पर उनके साथ भी काम करने की ज़रूरत है, कानूनी रूप से भी, मगर साथ साथ में उनके माइंडसेट या उनको भी शामिल करने के लिए साथ में काम करने की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने एम्प्लॉयर्स के साथ काम करना शुरू करा, गांव स्तर के जो संगठन हैं उनके बीच में जाकर बात रखना शुरू करा, सबको जब शामिल करना शुरू किया तो सच मायने में परिवर्तन सिस्टमेटिक आना शुरू हुआ। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी, बच्चों को देखने का दृष्टिकोण बदल रहा था, वो भी अब अपनी बातों में बच्चों की बातें करना शुरू किए थे और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि सभी साथी किसी एक मुद्दे पर, समाज के मुद्दों पर साथ में आ रहे हैं। By bringing together and influencing stakeholders like employers, parents, educators, government leaders, philanthropics, and very diverse youth, Synergy has emerged as a leading youth-centric organization in Madhya Pradesh.
For this work with the community on youth issues, Synergy was recognized with the National Youth Award by the Government of India in 2017. This is the story of the flowing principles, 7 mistakes that took us somewhere. Inclusion for all is our 5th insight. To know about our other mistakes, watch the other 6 films.